Hello, good morning. Myself, Gautam Sadawate, Assistant Professor and of the Department of Chemistry, UP Arts, System Science, and PPC Commerce College. In a series of lectures, we want to start topic first, that is a nucleophilic substitution reactions. We want to start first topic, nucleophilic substitution reactions. Before that, you must know what is a nucleophilic substitution. What is a nucleophilic substitution reactions? So before that, you must know some terminologies. Number one, what is a nucleophile? क्या आपको पता है what is a nucleophile? कोई बता सकता है? Nucleophile, general definition of nucleophile. Nucleophile, just you can remember, N is a negative charge. But all negatively charged species, it may nucleophile or it may base. But just we want to see the definition of a nucleophile. Nucleophile, negative. Nucleophile, the species which is a negatively charged or neutral species. Species which is a negatively charged or neutral having a electron rich species. The species which is a electron rich. The groups, the atoms or the species which is a electron rich species which always attack on a इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करते हैं मोस्टली, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन. नाउ दैट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जांपल जैसे कि OH माइनस आयन, ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस भी होता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस. When it attack on carbon, now that is considered as a nucleophile. When it extract a proton, then it considered as a base. Okay. Cl minus, now that is also act as a nucleophile. Sorry, no, that is also act as what we can say nucleophile. Those species, even negatively charged species, these are negatively charged species. There are some species which don't have any charge, just like a water molecule, H2O. H2O also act as a nucleophile because oxygen containing the lower pair of electrons. Second one is the electrophile. What is the electrophile? It is opposite to that of the nucleophile. Electrophile, it may be positively charged species or it may also neutral. The species which is an electron deficient, and it always attack on a electron rich center. जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर ये जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन एक्ट एज अ व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल. ब्रोमीन पॉजिटिवली चार्ज, now that also act as a what we can say electrophile. So these are some definitions. After that, you must know some terminology related to carbocation and carboanion. You know very well what is a carbocation. आपको पता होना चाहिए carbocation क्या है. So carbocation, the carbon which is a positively charged species. Now that is nothing but a carbocation. Now these are also called as a carbonium ion, but we confuse in between carbonium and carbanion. So IUPAC nomenclature system have a nowadays they have taken. Now that is a we can also consider as a this is the carbocation. We can also name as a carbocation. तो हम इसको क्या बोलते हैं? Carbocation हम इसको बोलते हैं. So we can consider now that is nothing but a what we can say
कार्बोकैटायन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट कार्बोकैटायन। ये जो है यहाँ पे कार्बोकैटायन है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से नाउ दैट इज अ कार्बोकैटायन। ये जो है यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। आपको कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन। its hybridization is a sp2 hybridize, कार्बोकैटायन इज अ sp2 hybridize। यहाँ पे जो भी कार्बोकैटायन होता है और जो भी कार्बोकैटायन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होता है। अब as a sp2 hybridize, now this is nothing but a what we can, its geometry, I think all of you know its geometry। sp2 hybridization की geometry कौन सी होती है, trigonal planar। its geometry is a trigonal प्लेनर ज्योमेट्री। यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है, इसकी जो भी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, एंड ड्यू टू ट्राइगोनल प्लेनर इट्स बॉन्ड एंगल इट इज टू बी 120 डिग्री। यहाँ पे जो भी बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है इन SN1, वी वांट टू डिस्कस दैट अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज अ फ्रंट साइड। नाउ सेकंड वन, यू मस्ट नो व्हाट इज अ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन, carbon which contain negative charge, now that is nothing but a carbanion। so this carbanion is a sp3 hybridized। आपको ये भी पता होना चाहिए कार्बनियन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, now that is nothing but a what we can say, now that is a sp3 hybridized। and as you know very well, sp3 hybridization have a ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो भी ज्योमेट्री है आपको तो पता ही होनी चाहिए। द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज अ दैट इज अ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये जो ज्योमेट्री है, सो दिस इज नथिंग बट अ, नाउ दैट इज नथिंग बट इट्स ज्योमेट्री, दैट इज नथिंग बट अ टेट्राहेड्रल। सो दिस इज अ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। आफ्टर दैट you must know some terminologies. Again, you must know what are reactions or various types of reactions. So depending upon reactions, now these are classified into various types. One is a nucleophilic substitution. Before that, you must know there are 4 types of reactions. One is a substitution. Number 1 is a substitution. Second one is a what we can say addition. Third one is elimination, and last one, now that is nothing but a rearrangement reactions. There are 4 types of reactions. Substitution, these are the reactions in which one or more than one group is to be substituted or it is to be replaced by another group, just like a this is a Rx. When that Rx react with Y, now what happened here, now this X is to be substituted by Y. So what happened here? Now there is a formation of Ry plus, now that is a removal of X. When one group or more than one also, one or more than one group, it is to be substituted by means of another group. Now that reactions are called as a substitution reactions. So these substitution reactions again class अपन फक्त in this ये जो लेक्चर है हम इसमें खाली substitution reactions का ही पार्ट लेंगे। हाँ, जो एडिशन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन एडिशन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, जैसे जैसे वो टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम उसको कवर करेंगे। So this is nothing but a nucleophilic substitution reactions. We want to these substitution reactions again classify into 2 types. One is a what we can say, one is a nucleophilic substitution reactions. One is a nucleophilic substitution reactions, and second one is a electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. So what is difference between these two? Already I have told you what is the nucleophile and what is the electrophile. Electrophile और nucleophile क्या होता है, ये जो दोनों जो है हमने यहाँ पे स्टडी किया है और हमने देखे। So when this X or when this is Y is to be nucleophile, when one or more than one group is to be substituted by a nucleophile, when one or more than one group is to be substituted by a nucleophile, such reactions are called as a nucleophilic substitution। हाँ, when ये जो Y जो है अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता है
when one or more than one group is to be substituted by means of a electrophile. Now that reactions are called as a, what we can say, now that is nothing but a electrophilic substitution reactions. So ये जो electrophilic substitution reactions है और nucleophilic substitution reactions है, these are further classified into two types: aromatic nucleophilic substitution reactions, aliphatic nucleophilic substitution. Aromatic means benzoate and aliphatic means open chain carbon. Similarly, electrophilic substitution also classified into two types. One is a nucleophilic substitution reactions, that is what we can say aromatic electrophilic substitution and aliphatic nucleophilic substitution. Now we want to start what is a nucleophilic substitution. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, सो यहाँ पे ये जो कार्बन है, सो दिस कार्बन इट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के बाजू में जो भी ग्रुप है, नाउ दैट इज नथिंग बट अ क्लोरीन। नाउ दैट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, दिस क्लोरीन इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे आपको ये जो क्लोरीन है, व्हेन क्लोरीन इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मींस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है तो ये जो रिएक्शंस है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नाउ दैट इज नथिंग बट वन इज SN1, second one is SN2. Also there is one more mechanism, now that is nothing but a SNI. SNI, we want to see one by one. What is SN1, what is SN2, what is SNI, and again one more things. Now that is nothing but a what is a NGP, neighboring group participation. So what you must know, what is a NGP also, neighboring group participation. These portions there is no need to study all that things. Now what we want to study, now that is nothing but a SN2. First of all we want to discuss what is a SN2. SN2 means, कोई बता सकता है what is SN2? SN2 का मतलब क्या है? Substitution nucleophilic bimolecular. Why these are called as a substitution nucleophilic bimolecular? All things also we need to discuss. Now we want to see generally primary alkyl halide. Generally which alkyl halide? Primary alkyl halide. Generally this यहाँ पे ये जो भी primary alkyl halide है, when R1, R2, R3 are H. When R1, R2 are all these are H. Now this alkyl halide primary, secondary और tertiary alkyl halide के बारे में आपको पता होना चाहिए. So this when R1, R2 and R3 are, it may be H, or when carbon is connected to one carbon, or when carbon is connected to one carbon and two hydrogen. Now that alkyl halide are called as a, what we can say, now that is nothing but a primary alkyl halide. तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी alkyl halide बोलते हैं. So generally primary alkyl halide when react with a nucleophile, when react with a aqueous KOH, when ये जो न्यूक्लियोफाइल है हम इसको क्या लिख सकते हैं? KOH भी लिख सकते हैं, aqueous KOH, aqueous KOH. When this is primary alkyl halide, now that react with a, what we can say, primary alkyl halide. Now it undergo reactions via SN2 mechanism. It undergo reactions via SN2 mechanism. तो यहाँ पे जो भी है, so what is to be happen here? Just I can told to you. Now what happen in step first? Now attack of a nucleophile. This is a single step reactions. ये जो the reactions है यहाँ पे, now this is a single step reaction. So OH minus, now that is nothing but a nucleophile. So what involve SN2? The attack of a nucleophile is to be takes place from a back side. यहाँ पे ब्लू कलर के एरो से दिखाया गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. When this nucleophile attack backside and at the same step there is a removal of a chlorine from a front side. यहाँ पे जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या होता है? आगे से जो है यहाँ से निकल जाता है. So this is a slow step. ये जो step है, now this is a slow step and these are called as RDS. तो हम इसको क्या बोलते हैं? RDS. Now that is nothing but a rate determining step. तो हम इसको क्या बोलते हैं? Rate
determining state. I think all of you know very what is a rate determining state, or what is, according to chemical kinetics, what is a rate law? What is a rate law? Anybody? कोई बता सकता है rate law क्या है? So rate law, rate of reactions is directly proportional to the concentration of a reactant. Concentration of a reactant. So आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए reactant क्या है. Rate is a directly proportional to the concentration of reactant. तो reactant यहाँ पे दो है, एक है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है सबस्ट्रेट. सो रेट ऑफ रिएक्शंस is directly proportional to the concentration of nucleophile as well as the concentration of a substrate. तो substrate कौन है यहाँ पे? प्राइमरी अल्किल हैलाइड. सो सी हियर, हेंस हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है यहाँ पे निकालते हैं. सो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे स्मॉल p यूज करते हैं, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट. इनटू न्यूक्लियोफाइल क्या है? अल्किल हैलाइड है. यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा जो है अल्किल हैलाइड. सो रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड अपॉन टू मॉलिक्यूल, दैट इज वन इज अ सबस्ट्रेट as well as a nucleophile. Hence these reactions are called as a ये जो reactions है हम इसको क्या बोलते हैं? We can say these reactions, now that is nothing but a nucleophilic substitution bimolecular. Why we can say this is bimolecular? Because the rate of reactions is depend upon two molecules. One is a substrate as well as a nucleophile. Substrate और nucleophile इन दोनों के ऊपर ये जो rate of reactions depend है. So one thing you can remember, nucleophile, attack of a nucleophile from behind the carbon and chlorine sigma bond. ये जो bond होता है यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से क्लोरीन ग्रुप जो है निकल जाता है और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है तो अटैक करता है. So this is a transition state. Now this is a crowded transition state. As soon as this transition state is to be formed, what happen here? Now the bond formation is to be takes place in between carbon and nucleophile, and at the same state the bond breaking is to be takes place in between carbon and chlorine. यहाँ पे one thing you can remember, ये जो है जब आप MOT स्टडी करेंगे, MOT molecular orbital theory, उसमें आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है ये आप जान जाएंगे. तो यहाँ पे this is a where sigma anti-bonding orbital of a carbon-chlorine bond is to be situated. और कार्बन और क्लोरीन की जो एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उस साइड से ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होता है? अटैक करता है. So this is nothing but a so attack of a nucleophile is to takes place from a back side, and hence nucleophile back side में अटैक करता है. इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सो दैट इज नथिंग बट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. सी ये जो है हमने इस वेबसाइट से ये जो दिया है, एक्चुअली PPT also I have taken from website, but the changes which I want now that I have done in that PPT. So this यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो है फ्रंट साइड से यहाँ पे रिमूव हो जाता है. सो दिस इज नथिंग बट SN2 रिएक्शंस. आई थिंक ऑल ऑफ यू गेटिंग SN2. आपको SN2 के बारे में पता ही होगा. सो दिस इज यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाला है ये न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड अटैक करता है. ये जो रिमूव जो निकलने वाला ग्रुप है, नाउ दैट इज नथिंग बट इट इज एक्सप्लेन्ड बाय मींस ऑफ बॉन्ड एंड सॉफ्ट. So this is also another example. Generally this is alkyl halide when react with the KOH. ब्रोमीन जो है यहाँ पे निकल जाता है. देखो यहाँ पे ब्रोमीन जो है यहाँ पे निकल जाता है. See here, now there is a removal of bromine. Okay. Also we want to see its energy profile diagrams. So this is also another thing. देखो यहाँ पे ये another example है MC. Now that is nothing but nucleophile. Attack of a nucleophile is to takes place from back side. देखो यहाँ पे ये जो MC जो है बैक साइड अटैक करता है और ब्रोमीन जो है यहाँ से फ्रंट साइड से निकल जाता है. So that is also I have taken from websites. Okay. This is an example not included in your syllabus, but you know very well how it is to be shown by this dimensions. And hence here you will get a
inversion in configuration. ब्रोमीन जिस साइड से निकल जाता है उसके अपोजिट साइड से साइनाइड ग्रुप जो है यहाँ पे अटैक करते हैं. See, this is the website. This is the source of. Hello, good morning. Hello. I think we want to stop here. I think internet problem is there, so we want to stop here. Hello. In next lecture, we want to discuss SL.